Hi guys, I'm about to go for a makeup appointments. I have two makeups at a client's venue और अभी मेरा एक स्टूडियो में मेकअप है वो फटाफट वाइंड अप करके I have to leave. So before that थोड़ा गुड़िया ठीक कर लेते हैं अपना. So this is a quick get ready with me कि मैं डेली में अपना मेकअप कैसे करती हूँ, बिल्कुल ऐसे झटपट 2 minutes वाला. So come let's start. I'm right now using this gentle cleanser. नहाते टाइम मैंने इससे फेस वॉश कर लिया था. This is my minimalist. Now I'll be using for skin. This is the face serum that I'm currently using. My minimalist. इसमें बहुत सारे ingredients हैं. To be honest, this came to me like a previously when I had bought stock. उसमें ऑफर में आया था तो I thought why not try it because इसमें बहुत सारे ingredients ऐसे हैं जो कि which are very good for your skin. And then I apply this cream. This is B12 Repair Complex. This is face moisturizer with vitamin B12 ceramide. Just about this much. One thing that I always do is while applying any kind of skincare product or a moisturizer or a face serum, I always do this with my eyebrows so that अगर मैंने eyebrows पे कोई product नहीं भी लगाना है वो naturally stick रहे अपनी जगह पे. You will be shocked to know what I use on an everyday basis on my skin. I use this. This is a CC cream. Just about this much. I mix it with my moisturizer and quickly with a brush. I don't apply foundation or something like that. This instantly brightens my skin and gives a very good look. समटाइम्स मुझे अगर इसका कवरेज ज्यादा करना होता है तो मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ, बट फॉर मी ऑन डेली बेसिस दिस इज फाइन. इसमें मेरा स्किन का कलर करेक्शन भी हो जाता है. आई डोंट अप्लाई टू मच ऑफ लेयरिंग, टू मच ऑफ मेकअप because while I'm working I like to keep it as minimal as possible. Then I have these 3 compacts which I keep with me in my personal vanity. This is MAC Studio Fix. This is in the shade NC30. This is slightly darker than my original skin shade and the foundation that the tint that I use. But again, थोड़ा डार्क मैं इसलिए रखती हूँ कि अगर कहीं पे भी मेरे डार्क सर्कल्स या कोई प्रॉब्लम आई हुई है तो वो डार्क कलर से थोड़ा बेटर हो जाता है एंड गिव्स अ लिटिल वार्म इफेक्ट ऑन द फेस. आई डोंट लाइक दैट कंप्लीट व्हाइट थिंग ऑन द फेस. देन वंस दिस इज डन आई यूज दिस स्मॉल little one. I had ordered these minis because while I'm traveling it becomes very easy to do makeup with this. तो अभी जल्दी जल्दी में यही है. डार्क लगाने के बाद I then use the light one and kind of set the CC cream. and इन compacts में भी coverage होता है. So bronzing, I'll be using good old Hoola. I use this kind of a brush and then quickly blend it with the brush जिससे मैंने compact लगाया था. And I kind of blend my jawline as well. And
ये जो मेरा ब्रश है, इसमें जो प्रोडक्ट लगा है मैं बस क्विकली उसी को अप्लाई कर रही हूँ. नॉट यूजिंग एनीथिंग फ्रेश, क्योंकि लास्ट टाइम व्हेन आई हैड गॉन फॉर अ पार्टी मैंने इस पे बहुत अच्छे से ब्लश लगाया था. आई डोंट थिंक वी नीड अनदर लेयर ऑन अ डेली. और यही ब्लश को मैं आईज पे भी लगा रही हूँ टू गिव मोर ऑफ अ पिंकी पिंकी इफेक्ट और काइंड ऑफ ब्लेंडिंग इन. Done. Now with this brush, I'm kind of blending my lines of the bronzer. Done. ट्रिक जो कि मैंने अपने व्लॉग में भी डाला है YouTube पे, अगर आपने देखा हो तो. This is my brown काजल and my eyebrow brush. इसी पे ही मैं ये ब्राउन काजल लेती हूँ ब्रश से. I quickly apply kind of a line. Same with the. तो जब मैंने काम शुरू किया था, this is to all the beginners, मैं हमेशा ना ऐसे चली जाती थी मेकअप करने. Because तब कोई गलती भी नहीं है किसी की, because that time your concentration is building your craft. Thank you बच्चे. Building your craft and then focusing on client को क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा. हम नए नए होते हैं इंडस्ट्री में, इतना कुछ हो रहा होता है ना. Plus I'm married as well, so the responsibilities of a house, and there came a point in my life where I stopped keeping myself at priority. But lately what I have realized and I have started doing is willfully I don't compromise with my house chores or duties or whatever responsibilities as a homemaker as well, and as a wife and as a pet parent. But with all of that I keep myself also as a priority. And if you start taking care of yourself and start just doing little bit, नहीं करना है इतना कुछ भी, आप सिर्फ एक लाइनर भी लगा लो और लिपस्टिक भी लगा लो, even that is enough. Kudos to you for taking that effort. Why? Because the kind of confidence you get is beyond your imagination, and you can't even think कि खुद पे इस स्टेज पे आकर के ध्यान देना at 35 takes a lot. Then I think I am very confident in everything. I am keeping myself out there in front of the public to judge me on a everyday basis. But I'm like, at least I'm trying. I'm at least better than those people who are lacking that confidence and try. So my complete thing about this blog is to motivate all the females, all the girls who want to make a name for themselves, who want to do something. Even if you don't want to work, even that is fine. But keeping yourself at priority comes at number one for you. मैं नहीं बोल रही आप अपने काम मत देखो, आप अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागो, बट थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल के डूइंग समथिंग दैट ब्रिंग्स यू दैट कॉन्फिडेंस, दैट हैप्पीनेस, दैट बूस्ट इन योर एंटायर डे. अगर आप अपने लिए 1 घंटा भी निकालते हो, दैट मी टाइम, वो आपको पता नहीं है, कैन डू वंडर्स फॉर यू. If you think I'm like joking about it, या मैं ऐसे वैसे ही फटिया मार रही हूँ, try it and let me know. Try it and let me know how important it is, because it takes guts. It takes guts. Now my favorite part, highlighter, थोड़ा सा pink golden. Because sadly, in the world that we are living in, जो दिखता है वो बिकता है. So if you're looking that part that you're going to do and make somebody's day, and you're looking that good and confident,
people have that genuine respect and love for you. I'm using this lipstick, lip crayon actually, and kind of just using it as a tint. Millennial, जैसे आजकल लोगों के लिए लाइनर बहुत फैशन में है and it's like the it thing to do. If you are born in 80s and 90s, you would know how important for us millennials was kajal. It was like a thing. आप liner ना भी लगाओ and put a good bold kajal. I still love that. These are my everyday rings that I'm going to wear. On this hand, this I've been wearing since my childhood. अब मेरी उंगली में डेंट आ गया इस का. I'm going to now quickly set my base. I'm using this why because मुझे पूरा दिन चाहिए कि ये रात तक रखा रहे मेकअप. I don't want to apply mascara. I want to do these silver basic hoops. Now I'm going to do my hair. I've already straightened my hair 2 days back. अभी थोड़े oily हो रहा है, which is why मेरे को थोड़ा sleek रखने का मन है. And done. And voila, I'm ready. I just want to do one more thing quickly, and that's to take my hula and kind of give it a shadow on the eye. उसी में ही जो था मैंने वही हल्का सा अपनी brows पे लगा लिया, eyebrows पे, to give it a shape and a tint. That's it. This is what I do for everyday glam. Thank you. Bye bye. Don't forget to like, share and subscribe.